हाय गाइस, वेलकम टू द गुड लाइफ प्लान। और आज का एपिसोड जो है वो म्यूज़िक पे है। तो फिटनेस, फैट लॉस, साइंस, इसके साथ म्यूज़िक कैसे, वो इसलिए क्योंकि मेरे गुड लाइफ प्लान में म्यूज़िक का बहुत बड़ा रोल है। माय सन पृथ्वी लव्स म्यूज़िक। वो क्लासिकल म्यूज़िक सीखते हैं, रविंद्र संगीत सीखते हैं, एंड दीज डेज ही इज़ टीचिंग हिमसेल्फ नजरुल गीति। तो और नजरुल गीति जो है वो थोड़ा सा अनपॉपुलर स्टाइल ऑफ सिंगिंग है अभी। ज़्यादा लोग सिखाते नहीं हैं, तो फिर वो अपने आप सीख रहे हैं। एंड दीज डेज ही इज़ ऑल्सो स्लोली गोइंग इनटू जैज़ एंड ब्लूज़। तो पृथ्वी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है मेरे लाइफ में। सेकेंडली माई मदर, शी यूज़ टू लर्न म्यूज़िक एक ज़माने में, पर फिर बच्चे और घर और इन सब के इनको संभालते हुए म्यूज़िक जो है वो बैक सीट पे चला गया। बट देन 2 years back, while she was going through a very difficult phase of her life, she went back to music. अब 78 पे उन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखना शुरू किया। बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की बातें बताई कि ये पॉसिबल नहीं है, बट मॉम कंटिन्यूड एंड आई थिंक शी इज़ काइंड ऑफ डूइंग वेल, एट लीस्ट एज फार एज हर टीचर्स गो। मैं इन दोनों के बीच में हूँ। देर आर डेज व्हेन आई रियली सिंग वेरी वेल, एंड देन देर आर डेज व्हेन आई विश आई हैड संग बेटर। और हम तीनों के साथ हैं प्रतीक। तो प्रतीक गाना नहीं गाते, बट सब हमारा मानना ये है कि प्रतीक की म्यूज़िक सेंस हम सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो जब हम डेट करते थे तब हमारे गाड़ी में ज़्यादातर रॉक और मेटल बजता था। फिर 10 साल पहले उनकी म्यूज़िक टेस्ट जो है वो बदली जब हमारे पास नया म्यूज़िक सिस्टम आया। तो उस टाइम पे एडेल के साथ बीच बीच में ए आर रहमान की गेस्ट अपीयरेंस होने लगी हमारे ड्राइंग रूम में। बट लास्ट ईयर इट रियली चेंज्ड, लाइक कम्प्लीटली चेंज्ड। इवन प्रतीक भी यही मानते हैं कि हिज म्यूज़िक सेंस कम्प्लीटली चेंज जब उन्होंने अपने हाथों से हमारी म्यूज़िक सिस्टम को अपग्रेड किया। तो उनका रिश्ता साउंड से, म्यूज़िक से कैसे बदला, एंड प्रतीक इज़ द बेस्ट पर्सन टू टेल यू ऑल अबाउट इट। थैंक यू सुदीप्ता। आपने बोला कि मेरी एक म्यूज़िक सेंस थी। सेंस क्या है, थोड़ा सा इसको हम इलेबोरेट करते हैं। सेंस है इज़ द एबिलिटी टू सी और टू सेंस, राइट। कैसे इंस्ट्रूमेंट्स improve our ability to see is what I am going to discuss. I am a photographer and I know how a good camera lens works to make a good picture. Now on the same camera, if you were to put a Cosina or a Samyang or a Tamron lens, you'll be able to shoot pictures and you'll get good pictures. But on the same camera, if you were to put a Zeiss Distagon, a Milvus or a Planar, you will get a different kind of a image. And I'm not even talking about, I use a Nikon and a Fuji, and I'm not even talking about their own lenses, which are also fantastic lenses. But we are here going many steps above. These instruments, for example, the music system, the new music system, has opened up a world for me. My previous music system, which I still have, is no slouch either. But the new music system has made me appreciate talent like I had never done before. I give you an example. There's a movie called Masan. It has just 3 songs, and I think by Indian Ocean. And I love the lyrics of the first song. तू जो रेल सी गुजरती है, मैं एक पुल सा थरथराता हूँ. I love Varun Grover's lyrics. And that was it on the previous music system. Once maybe we heard it. But on the new one, it has become my reference track. So much so that I evaluated a very high-end set of audio setup in a high-end audio showroom in Gurgaon, and came back thinking that my music system is so far better than that very expensive one. Anyway, so
what happened here? It's just that the object revealed a world which was blurred and hidden, just like that lens. You know, those leaves in the corner, or the faces, or the eye which is not that sharp suddenly becomes so much sharper and so much more vivid and so much more visible. The same way the new music system has done that. And not just that, I've begun enjoying music in a manner which I had never done before. I will disappoint worshippers of The Dark Side of the Moon. It is not the greatest album in the world, believe me. Now I've discovered, and it may surprise you as well, Omkara, our very own Omkara. That album is light years ahead of most stuff that I have heard. The context, the content, the mixing, lyrics, vocals, you name it. It is an exceptional album. It's luxury. It's not just luxury, it's an experience. And that experience, Sudipta is pretty sick of now. Because every third day, Prithvi and I have to, after listening to everything else, we have to put our Omkara album, and we invariably listen to the whole album from the beginning to the end. And I go back, I go to sleep, humming those songs. And some of them are so sad, some of them are saucy, some of them are heroic, and they have a huge repertoire of instruments. But because of this music system, I bow my head to all those who came together or who have come together to make fabulous music. And it's not, okay, Omkara is definitely one of the highest albums, best albums I've ever heard. But, I discovered artists which I had no idea about. James Mason, what beautiful fretwork, guitar, string work, and even the sliding of the fingers on that is that texture. You just enjoy. Ponta Box from Japan, fabulous music. Kurt Green, these artists I had never heard of. Buddy Guy, even the oldies like B.B. King. The side of that his fretwork, his guitar, his blues is just the way it comes forth and is displayed. The new instrument is doing justice. And more than anything, this is not about the music system itself. It's an addition to the family that has just brought a different atmosphere to the whole to these walls. Yesterday, my son was swaying to, and Sudipta missed that part, and I was privy to it. Was swaying to Charles Mingus's Porky Pie Hat, Goodbye Porky Pie Hat, and better get it down here. He was swaying to it like that, as if lost in those trumpets, those saxophones, and the piano and the drums and the cymbals, and it's a very complex orchestra. And how beautiful that moment was for me. Just that fabulous music playing in the backdrop, and my son swaying to that. Maybe he doesn't understand any of it, but the experience for him and for me is special. A little bit about the music system. It's been a journey. I started with procuring the amplifier. It's a Michi X3, and I like my music dark and strong. I don't prefer too much of mid-range. So a top end and a very strong bass is what I like. And from thereafter began my journey of learning.
again, I marveled at where we are. Today, a friend shared with me a video of a very old music system, as he called it. It was just a cylinder of wax which would be put on a gramophone. That was his master's voice kind of thing. And now we have digital to analog converters, which are like the Sigma Delta or R2R ladder or program field gate array versions of, and then there are many others. And in these small devices are clocks which sample the signals at femtoseconds. And if you know what a femtosecond is, it's a 10 millionth of a billionth of a second. So these are things which are there in our music systems now. And my learning and journey made me some great friends also in this audio world. And I visited forums, I learned and I collected. My speakers came from Pune, my subwoofers came from Kolhapur, my DAC came from Singapore, and that's how I made it. It's not that I took my checkbook to an audio store and just bought the whole thing together. It's not. It was not like that. One after the other, and the journey hasn't stopped yet. So that was the saga of my music system and turnover of my world. It has its positives and negatives. The biggest negative is that I don't want to do anything else other than sit on my sofa and listen to some new artist. My painting has just come to an abrupt halt. I mean, I haven't. Very grudgingly, I had made one painting in the middle, but I have to somehow find my way, a way to come out of its spell and start painting again. And over to real life musicians, Sudipta, Prithvi, and Mom, and we will enjoy their song. Everyone, I am Prithvi. Today the first song we are going to sing, Kon Puraton Pranet Tane. It is based on rains. Rabindranath Tagore wrote this song at the age of 68. But I don't know the literal meaning of the song, but I like its tune and the way my Guru Shama Chakraborty taught it. কোন পুরাতন প্রাণী টানে ছুটেছে মন মাটির পানে কোন পুরাতন প্রাণী টানে ছুটেছে মন মাটির পানে কোন পুরাতন প্রাণে টানে চোখ ডুবে যায় নবীন ঘাসে ভাবনা বাসে পূব বাতাসে মল্লার গান প্লাবন জাগায় মনের মধ্যে শ্রাবণ গানে কোন পুরাতন প্রাণে টানে লাগলো যে দোল বনের মাঝে লাগলো যে দোল অঙ্গে সে মোর দেয় দোলা যে অঙ্গে সে মোর দেয় দোলা যে লাগলো যে দোল যে বাণী ওই ধানের খেতে আকুল হলো ওই করেতে আজি মেঘে শ্যামল মায়ায় সেই বাণী মোর সুরে আনে কোন পুরাতন প্রাণে টানে ছুটেছে মন মাটির পানে কোন পুরাতন প্রাণে
কাটে কেমনে আজি শ্রাবণ নিশি কাটে কেমনে আজি শ্রাবণ নিশি কাটে কেমনে গুরু দিয়া গরুজন কাঁপে হিয়া ঘন ঘন ছন ছন করে বায়ু নিপু কাননে আজি শ্রাবণ নিশি কাটে কেমনে ঘন না 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 ঘোর ঘোর ঘন না 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 ঘোর 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 গরজত আয় ঘন না 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 ঘোর ঘোর অন্ধ নিষিদ্ধ মন খোঁজে গারে আধারে অন্ধ নয়ন ঝরে শ্রাবণ বরিশায় অন্ধ নিষিদ্ধ মন খোঁজে গারে আধারে অন্ধ নয়ন ঝরে শ্রাবণ বরিশায় ভাঙিয়া দুয়ার মম এসো এসো প্রিয়তম ভাঙিয়া দুয়ার মম এসো এসো প্রিয়তম শুষিছে বাহিরে ঘর ভেজা পবনে আজি শ্রাবণ নিশি কাটে কেমনে आयरे तू बरखा भीगे सदा रंग आयरे तू बरखा भीगे सदा रंग पवन चलत पुरवैया सनन सनन ना 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 सनन सनन ना 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 सनन सनन ना 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 घन ना 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 घोर घोर घन ना 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 घोर घोर घन ना 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 घोर घोर Now we are singing another Varsha song, Varsha Tego song based on rains. শ্যামল শোভন শ্রাবণ তুমি নাই বগলে সজল মিলন আঁচল মেলে না না নাই বগলে শ্যামল শোভন শ্রাবণ তুমি নাই বগলে পূব হাওয়া কয় ও
আছে দিন ও যে হলো সাথীহীন কালো মেঘের আর কি আছে দিন ও যে হলো সাথীহীন পূব হাওয়া কয় কালো এবার যাওয়াই ভালো শরৎ বলে নীল বিষগান গেল গেল পূব হাওয়া কয় কালো এবার যাওয়াই ভালো শরৎ বলে নীল বিষগান কালো আলো সাজবে বাদল সোনার সাজে আকাশ মাঝে কালী মাওর ঘুষিয়ে ফেলে না না নাই বা গেলে শ্যামল শোভন শ্রাবণ তুমি নাই বা গেলে Next song is a bandis based on Rakh Patdeep and I love its tune and I love the way Hema ma'am taught me. Gama pani sada ma pa ga ma pa ga ma ga re sa गरज घन काड़े बादल वा गरज घन काड़े बादल वातया कुला वे मन मोराता कुला वे मन मोरा कौंदन लागी बिजुड़िया गरज घन काड़े बादल वाधरुआ की तेरे मन नहीं भावे धरुआ की तेरे मन नहीं भावे तू गड़ पिया बिन जिया कुलावे तू गड़ पिया बिन जिया कुलावे काम करू पूलन के हरवा गरज घन काड़े बादल वा गरज घन काड़े निसा गमा पामा गड़ी सा गरज घन काड़े गामा पानी सानी ढापा मागड़ी सानी सा गरज घन काड़े पानी सानी ढापा मापा गामा गड़ी सा गरज घन काड़े बादल वा गरज घन काड़े गरज घन काड़े गरज घन काड़े। तो हमारी म्यूजिकल इवनिंग के 5 कैरेक्टर्स थे, मैं, पृथ्वी, मॉम, प्रतीक एंड गुड लाइफ प्लान। गुड लाइफ प्लान कैसे? क्योंकि गुड लाइफ प्लान का एक बहुत फंडामेंटल टेनेट है टू लिव विद द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, दैट इज़ अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज all that the universe has given us as a blessing. That includes our health, our family, our friends, and of course the abilities that lie latent within us. तो मेरा ये मानना है कि हम सबके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो अलग है, जो हमें स्पेशल बनाती है।
बट ये ऐसा होता है कि ज़िंदगी की गाड़ी में कभी कभी वो एबिलिटी बैक सीट पे हम रखते हैं, कुछ लोग उसे इतना संभाल के रखते हैं कि अपनी गाड़ी में लेके भी नहीं चलते। और मैं ये मानती हूँ कि गिफ्ट्स हैं ये यूनिवर्स के, और आई एम ट्राइंग टू इंस्पायर यू टू शेयर योर गिफ्ट्स विद द वर्ल्ड, क्योंकि गिफ्ट्स के दो ही काम होते हैं, खुशी से देना और प्यार से उसे लेना। तो आई एम होपिंग कि हमारा ये जो छोटा सा इवेंट था आपको अच्छा लगा होगा, एंड इट विल इंस्पायर एंड एनकरेज यू टू डू द सेम विद योर गुड लाइफ। थैंक यू वेरी मच।